Good evening. Welcome to this edition of Northeast Diary. Here we bring you the latest developments from India's unexplored Northeast region. In today's edition, we will talk about the unique Mizo heritage of male dormitory system, Zolbuk. The historic Ganga Vilas cruise has reached the shores of Assam. We will also inform our listeners about this. The festival of Losar has been celebrated across Sikkim. As per the lunar calendar, Losar is the Tibetan New Year, which usually falls in the month of February. The festival is generally observed by the Tibetan and Sherpa Buddhists. Let us hear more from a Sikkim correspondent. Losar is one of the most vibrant festivals of Sikkim. The Tibetan New Year is celebrated by a number of rituals, prayers and ceremonies over a period of 15 days. The festival is marked by cleaning of homes and decoration with new flags and banners, offerings to gods and ancestors at monasteries, family gatherings and exchange of gifts, traditional dances by monks to ward off evil spirits and bring good fortune, preparation of food like barley cakes and dumplings, and other community festivals, among other rituals. Sikkim Governor Lakshman Prasad Acharya and Chief Minister P.S. Tamang have wished people on Losar. Mr. Acharya said, Losar brings with the hope and aspiration for a new beginning, and such festival marks our unique and significant identity. He urged citizens to continue to support each other and show kindness and compassion. In a message, Chief Minister P.S. Tamang said, Losar symbolizes the traditions of love, brotherhood, tolerance and communal harmony, which the people of Sikkim have cherished since time immemorial. He appealed to citizens to strengthen brotherhood among all communities. With Saikia Sarkar, this is Mukhopadhyay for AIR News Sikkim. The state of Mizoram has a unique heritage of Zwalbuk. The Zwalbuk means a male dormitory system. The system was practiced in Mizo social system of the yesteryears, and though it's now almost obsolete, it still exists in some areas of the state with a little innovation. Our correspondent from Aizawl reports on the details of the system of heritage of Mizoram. Zolbuk was a facility set up in every village for housing all male bachelors of every village. As it was practiced long back in Mizo society, all bachelors had to spend night time in that largest house of any village. Not merely a bachelor's dormitory, in fact, the Zolbuk had much deeper significance. It was one of many social systems which has a prominent role in shaping the youth into responsible adult members of the society. Zolbuk occupied a central position in the organization and administration of every Mizo village. But how did it work? What was its significance? Whether that significance is still prevailing in Mizo society, let us try to find answers to all this curiosity on Zolbuk. Lodging in Zolbuk was compulsory to the male members of above 15 years of age in the community. They had to stay there at night, and that would continue until their marriage. The bachelors had their meals at home and performed all personal and family chores only during the day. It was a center of village education, defense, discipline and development. It was strictly a social institution where all forms of physical training and arts and crafts and moral education. In the Zolbuk system, the age-old social traditions, values and customs were projected before the youth for their knowledge and upbringing. Before the formal education system was established, Zolbuk was the only system in Mizoram to educate the youth. The real needs of the Mizo society was counteracted through this collective mechanism. According to scholars, the family and society formed a symbiotic whole and functioned in complete reciprocity through the Zolbuk. The system posed as a balancing unit between the old and the new generation, with its built-in recognition of the rights and needs of each and every individual in the society, without deviating from the age-old social psyche. For Northeast Diary with Subhashis Chanda, Irene from Aizawl.
Nagaland Police has launched the State Police Hotel Check-in Portal to monitor guests in the hotels and guest houses in the state. It was officially launched by the Director General of Police, Nagaland, Rupini Sharma, on the 15th of this month. A report. Nagaland Police launched Police Hotel Checking website and online system to monitor the records of guests staying in all hotels and guest houses in Nagaland. Director General of Police Nagaland Rupin Sharma, who launched the website, said the system has been done to upgrade the capability of the police department in keeping vigil among the people visiting hotels and guest houses, not only during the election time but in the future too. This is a small upgradation of our own capabilities which we have done, not for the elections only but for the future also. And all police stations have to send reports of the people staying in the hotels and the guest houses to the police, the nearest police station every day. They send hard copies every morning. So once it is a hard copy, it's very difficult to retrieve data. We don't even know, sometimes most people don't even read it in the police station, so the data just goes waste. So we thought that we will digitize this entire system and make it user-friendly. So what we have basically done is we've made this portal where each hotel or a guest house will log in and create his own username and password. So once he uses his own username and password on that URL, that website, he can enter the details of any of the guests who visit the hotel. So whenever the data is entered, part of that data comes automatically for access to the police station, to the SP level and to the police headquarters level. The system is accessible via URL nglpportalchecking.com. Nagaland police personnel can access the site across different levels at state, district or police stations and view the hotels and guests registered within their jurisdiction. Under the system, hotels will be required to register in the site with a valid email address and submit the details of all the guests on a daily basis. For Northeast Diary, this is Asanu from AIR News, Kohima. The world's longest river cruise, Ganga Vilas ship, reached Guwahati last Monday on the 42nd day of the voyage. All the 28 tourists on board were given a rousing reception at the IWAI Pandu port after it anchored with Saraighat Bridge in the backdrop. After disembarking, the tourists were offered tea while they relished the colorful folk dance performances by the troops of Karbi and Tiwa communities by the bank of Brahmaputra in the milieu of the sublime evening sun against the mystical Saraighat Bridge in Guwahati. Flagged off by Prime Minister Narendra Modi, the historic cruise set sail from Varanasi on 13th of January. A report. प्राचीन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत स्रोत रही हैं, बल्कि विश्वसनीय नौचालन मार्ग भी साबित हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन राष्ट्रीय धरोहरों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश का अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा और देश में पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। विकास की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की
इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा, जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक करीबी झलक मिलेगी। काजीरंगा के घने जंगल, गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर, निचले और ऊपरी असम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल कम सड़क धमनी बोगीबिल पुल का वास्तुशिल्प चमत्कार और माजुली की सांस्कृतिक शामें इस यादगार यात्रा का अंतिम पड़ाव हैं, जहां विश्व का परिचय पूर्व की विशेष तौर पर संजोई गई सांस्कृतिक और पाक विधाओं से होता है। तो आइए और हमारे साथ मिलकर भारत की पावन नदियों के समृद्ध और अनछुए इतिहास का जश्न मनाइए, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के समग्र राष्ट्रीय संकल्प के तहत पूरा देश मना रहा है संस्कृति का एक अद्वितीय उत्सव। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m., brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Don't forget to tune in. In Meghalaya, the electioneering is underway in full swing as major parties are making all-out efforts to woo the electors in their favour. Top leaders of all major parties are descending to Meghalaya for the last leg of the campaigning in support of the respective candidates as the day of the poll draws closure. The polling will be held on the 27th of this month. The centre has honoured Bikram Bahadur Jamatia, a veteran social activist from Tripura, with the prestigious Padma Shri Award. Mr. Jamatia, who devoted his life in social work, was instrumental in driving away the insurgent groups in Tripura, known as All Tripura Tiger Force and National Liberation Front of Tripura, which had wreaked havoc in the northeastern state in the mid-90s and early 2000s. In a candid talk with All India Radio, Mr. Jamatia went down the memory lane and shared certain interesting anecdotes. Let us listen to this interview. Talking to him is Kunal Shinde. नमस्कार, आकाशवाणी की इस विशेष साक्षात्कार में मैं कुणाल शिंदे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा से एक खास शख्सियत है जिनका नाम है बिक्रम बहादुर जमातिया। बिक्रम बहादुर जमातिया को हाल ही में समाज कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1960 में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करने के बाद 1967 में उन्होंने त्रिपुरा के स्टेट सेक्रेटरिएट में बतौर सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। सरकारी सेवा करते करते राज्य सरकार में काम कर रहे SC/ST के कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करने के लिए प्रयास किया। आइए हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं और जान लेते हैं उनके इस समाज कार्य के बारे में। स्टेट सर्विस में जब आप काम कर रहे थे तो आपने देखा कि वहाँ के जो कर्मचारी है SC/ST वर्ग के, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, नहीं मिल पा रहा तो है। आपने क्या कदम उठाया? उनको रियलाइज करने के लिए मैंने एकत्र संभव नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऑल ST/SC एम्प्लॉयज को एकत्र करने के लिए त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति ट्राइबल एम्प्लॉयज एसोसिएशन नाम करके ऑर्गेनाइज बनाया। ऑर्गेनाइज बना करके एंटायर राज्य में मेरा विस्तार शुरू हो गया।
विस्तार इतना ज्यादा से ज्यादा हो गया, वहाँ पर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली वाम पार्टियों का, लेफ्टिस्ट ग्रुप का जो कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन सीआईटीयू ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी करके कांग्रेस का कर्मचारी समिति है भी पूरा मैंने काम को ऑब्स्ट्रक्शन किया। लेकिन मैंने ऐसा ऑब्स्टैकल दूर करने के लिए त्रिपुरा उपजाति युवा समिति करके नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन युवा समाज को सृष्टि करने का मौका दिया। ऐसा करके युवा समिति नाम करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन नॉन पॉलिटिकल होने के नाते तो कुम काम नहीं होगा, इसलिए युवा समिति को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। उनका एमएलए एमपी बनाना का आइन पास करने के लिए उनको त्रिपुरा में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके ऑल सोर्स ऑफ फैसिलिटीज जनजाति के अदाय करने के लिए त्रिपुरा में षष्ठ तहसील चालू करने के लिए आंदोलन किया। षष्ठ तहसील आंदोलन, षष्ठ तहसील बिना कोई कोई एडीसी प्रशासन नहीं चलेगा, इसलिए 6 शेड्यूल अदाय करने के लिए मूवमेंट हुआ। मूवमेंट करके सब पार्टी को वहां को इन्वॉल्व किया जनजाति के हितार्थ। त्रिपुरा में भी 6 शेड्यूल इंट्रोड्यूस होने पड़ा, इसलिए संग्राम करके समस्त सब जनजाति को, सब पार्टी को इकट्ठा करके 6 शेड्यूल त्रिपुरा में इंट्रोड्यूस करने के लिए मूवमेंट हुआ। 6 शेड्यूल होने के बाद वहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रतिष्ठित हुआ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होने के नाते वहां पर आइन जनजाति को लिए आइन पास करना शक्ति आता है, इसलिए 6 शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चालू हुआ। एक मूवमेंट करना पड़ा, ये भी जनजाति समाज का हिताय हुआ। त्रिपुरा में ST/SC एम्प्लॉयज रिजर्वेशन पास होने के बाद 14,000 ST/SC रिजर्वेशन वैकेंट पोस्ट मिला। एक वैकेंट पोस्ट फिलअप करने के लिए राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ गया। ऐसा करके 1989 में ST/SC रिजर्वेशन पास हुआ, 1992 रूल्स पास हुआ। इसके बाद रिजर्वेशन के लिए वो भी अभी भी एक्टिव है, वो आइन अभी भी चालू है। इसलिए ऐसा फॉलो करना बिना कोई जगह में एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट नहीं होता है और प्रमोशन नहीं होता है। अभी भी ऐसा आइन पास होने के लिए ऐसा बहुत काम है, लेकिन इतना शक्ति जोगान देख रहा है जनजाति के जन्म कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए उनके बाद 1997 में 1 अक्टूबर जो मैंने रिटायर किया, दिसंबर में कम्युनिटी चीफ के सिलेक्शन हुआ। समाज का सब हिताहित देखने के वाले दायित्व मिला। सुप्रीम कमांडर होने के नाते सर्वे किया, समाज का प्रॉब्लम तब देखा जब वो आपका धर्म, आपका संस्कृति, आपका कृष्टि कुछ अच्छा ढंग से करने नहीं पा रहा है। 97 में जब सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, तो आपने देखा कि जो इंसर्जेंट ग्रुप थे यहाँ पर, वो यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पे परेड हो चुके थे और लोगों पर जोर जबरदस्ती और कन्वर्जन के इश्यूज भी हो रहे थे। तो आपने इसके लिए क्या कदम उठाए? मैंने सर्वे करने के नाते समझ लिया जब समाज का आपका कृष्टि संस्कृति ऊपर वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने हाथ दिया, वो हाथ को कंट्रोल करने को रेसिस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने धर्म पर अटैक हुआ, यही शक्ति के लेकर के मैंने त्रिपुरा में सनातन धर्म परिषद बना करके समस्त धर्मीय समाज को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वो सब मदद दिया। मदद देने के लिए उन लोग ने मेरे सहायता किया, लेकिन सिर्फ सहायता होने के नाते ही तो वो एक्सट्रीमिस्ट को लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पास गया, जाकर के तो होम मिनिस्टर के LK आडवाणी साहब को पास गया। जाने का उन्हें ऑल सोर्स ऑफ असिस्टेंस मैंने प्रोवाइड किया, ऑल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट देने के फुर्सत मिला। वो मिल करके उग्रवादियों को उनका कहाँ घूमते थे उस जगह देख कर ऑपरेशन किया मैंने। पुलिस फोर्स, CRPF फोर्स, आदिवासी फोर्स, मेरा वॉलंटियर्स फोर्स लेकर के सब सर्च किया। वन जंगल, बरमोड़ा, अथरमोड़ा, समस्त जंगल सर्च करके ऐसा करके उनको को दांत मंगाया। उन लोग मेरा शास्ति देने के लिए, मेरा दुर्गा पूजा करने के लिए गोली वृष्टि किया। वो गोली वृष्टि में भी हम लोग ताकत के साथ उनका फेस किया। ऐसा करके त्रिपुरा में जो पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है उनको रेसिस्ट किया, उनको छुड़ा दिया, वहां त्रिपुरा से भगा दिया। ऐसा करके 2002 तक कम्प्लीटली एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज खत्म किया। वो भी जनजाति समाज का सोशल सर्विस हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। ऐसा काम देखने के बाद मेरा कम्युनिटी चीफ का टेन्योर भी खत्म हो गया।
तो मेरा उत्तर पूर्व भारत में जो 7 सिस्टर स्टेट है वहाँ मुझे बुलाया, वहाँ पर एक आपका जैसा करके आपको त्रिपुरा में एक्टिविस्ट को रेसिस्ट किया, ऐसा करके हमारा राज्यों में भी करना पड़ेगा। यूनाइटेडली हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो ऑर्गेनाइजेशन है जनजातीय फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम। सारा भारतवर्ष में उनका वाणी मैंने प्रचार किया। जागता पूर्वांचल, अभी ये पूर्वांचल में आपका कृषि संस्कृति धर्म रक्षा करने वाला ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऐसा करके समस्त भारतवर्ष से घुमाने के बाद ऑल सोर्स ऑफ असिस्टेंस वेरियस कॉर्नर, पर्टिकुलरली विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, मेरा साथ इतना करके उन लोग हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड किया, समस्त जनजाति समाज को एक्सेप्ट कराया और सभी फील किया। बहुत दिन के बाद इतना समय का दाबी है ठीक, और आगे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो तो हम लोग बहुत अच्छा होता, ऐसा करके सभी बात किया। मेरा एक काज कोई सोशल सर्विस जनगण के लिए किया ऐसा करके मेरा एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया। समस्त भारतवर्ष बड़ा बड़ा शहर, पर्टिकुलरली गुवाहाटी, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलुरु, सब ने मैंने रिवार्ड दिया। समाज सेवा का नाम दिया करके मुझे धन्यवाद दिया। आपके जीवन काल में आपने संघर्ष किया है। 86 साल की उम्र में आपका क्या उद्देश्य है? आपको क्या और समाज कार्य करना है? मैंने एक प्रत्येक समाज सम्मानित व्यवहार पा करके जीवित हो, आपका समाज का कल्याण और समाज का मनुष्य तैयारी हो, मनुष्य जाते समाज को अवहेला करना सक्षम ना हो, ऐसा चिंतन करने के लिए अभी भी काम कर रहा हो। मैंने त्रिपुरा का जो 19 जनजाति समाज है ना, उस जनजाति समाज का प्रत्येक समाज का कस्टमरी लॉ कोडिफाइड करा के, उनका आइन करा के, उनके रूल्स करा के जाऊंगा। जाने का सक्षम अभी भी है। बढ़िया कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। एक जनजातीय फोरम का त्रिपुरा राज्य में सबसे बड़ी बात है, हमारा जनजाति समाज का कृष्टि संस्कृति धर्म नष्ट करने के लिए जो वादी हो, जो दल हो, जो आता है, उनके साथ संग्राम करने के लिए रेस्ट ऑफ माई लाइफ संग्राम करूंगा। ऐसे ही मेरा अभी भी एटीट्यूड है। पद्मश्री पुरस्कार आपको जो मिला है, तो ये आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? आगामी काल भी आएंगे। मेरा जो कर्मचारी समिति करके 97 ने सूट दिए ना, वो लोग कल सब आएंगे मेरे पास, कांग्रेचुलेशन करेंगे। तुम्हें जो इतना बढ़िया काम कर, इतना समाज सेवा कर, इसलिए सबके लिए करने के लिए जो आनंद है ना, वो आनंद ऐसा रिवार्ड मिलने से और आनंद बढ़ जाता है। ऐसा सबसे बढ़िया बात सेंट्रल गवर्नमेंट को सही कैसे करके मुझे सुना गया, मेरा एक काम को भी इतना बड़ा एक्सेप्टेंस दिया गया। ऐसे ही मेरा सबसे सौभाग्य है, गर्वित है। रियली आई प्राउड ऑफ इट। Northeast Diary, bringing you enchanting stories from the northeastern part of India. This program is broadcast every Thursday at 5:30 p.m. on FM Gold and on our app News on AIR. We look forward to you walking this journey with us every week. Arunachal Pradesh, the land of the rising sun, celebrated its 37th statehood day on Monday with fanfare. A report. With more than 100 tribes and sub-tribes having their own distinct identity, Arunachal Pradesh is one of the most diverse states in India. These tribes are like flowers of different colors, embroidered on the beautiful fabrics of natural landscapes with mountains and valleys. This beautiful state became a full-fledged state on February 20, 1987. Till 1972, it was known as the Northeast Frontier Agency, NEFA. It gained the Union Territory status on January 20, 1972 and was renamed as Arunachal Pradesh. Administratively, the state is divided into 25 districts. The state capital Itanagar is named after the remains of the Ita Fort, which means fort of bricks, built in 14th century AD. The Statehood Day, as usual, was celebrated with great fanfare across the state. The main function was held at IG Park in Itanagar. Gracing the function, President of India, Srimati Draupadi Murmu, said that Arunachal Pradesh and other northeastern states
are playing a crucial role in giving a new direction to the development of the nation. She said, being the largest state in the northeastern region in terms of area as well as being a border state, Arunachal Pradesh is a very important state from strategic and geographical point of view. The President said that in India, the first ray of sun fall on Arunachal Pradesh. The different tribes of Arunachal Pradesh, their cultural heritage, the unity in diversity inspires us all. It can also be said that the society of Arunachal Pradesh is the microcosm of India. On the occasion, Governor of Arunachal Pradesh, retired Lieutenant General K.T. Parnaik, released 2 animation films on indigenous folk stories of the state, namely Abotani, the origin of Draw Duck Festival, and Baum Kakir. He also released a coffee table book on unsung heroes of Arunachal Pradesh and presented its first copy to the President of India. For Northeast Diary, this is Rakesh Dole, Air News, Itanagar. And now let us listen to this lovely number in the beautiful produced by Sharmila Goswami and assisted by Kumar Gaurav. It was brought to you by the News Services Division of All India Radio.